guys, now we are at Lachung and heading towards 0 point, and on the way we will be seeing the beautiful Yumthang valley. So let's have the early morning ride. It's 6 AM. 0 point करके हम लोग रिटर्न बैक आएंगे गैंगटॉक, जो कि अप्रोक्सीमेटली 200 प्लस किलोमीटर का राइड रहेगा, और ये रहेगा हमारा नॉर्थ सिक्किम का कंप्लीट सर्किट जो हम लोगों ने कंप्लीट किया. We got a room in Lachung for 1000 rupees, which had 5 beds, and that was quite comfortable for us. There are not much options for having food there. All you have in Lachung is thali system, where veg thali, egg thali or chicken thali you can take, and it costs around 200 to 300 rupees per thali. आप लोग लाचुंग जब क्रॉस करते हो तो वहाँ पर एक चेक पोस्ट है जहाँ पे आपको परमिट दिखाना पड़ता है, और वहाँ पर आपको 20 रुपीज़ का पार्किंग भी पर बाइक देना पड़ता है. उसके जस्ट एक 10-15 मिनट्स राइड के बाद आपको एक फॉरेस्ट रेंज ऑफिस दिखता है, जहाँ पर कि आपको पर बाइक 100 रुपीज़ गार्बेज कलेक्शन के लिए देना पड़ता है टू मेंटेन दी क्लीनलीनेस इन युमथांग वैली. When you start from Lachung, on the way you have to pay 20 rupees per bike as a parking fee for Yumthang, and also 100 rupees per bike for the garbage. ये युमथांग में एक छोटा सा कैफ़े है जहाँ पर हम लोग रुके हैं खाने पीने के लिए. हम लोगों ने अंडा और मैगी खाया है, और यहाँ पे आपको ओल्ड मॉन्क रम भी मिलता है अगर ठंड लग रही हो तो. जल्दी में बनाया ना, इसलिए कैसा है टेस्ट मालूम नहीं. While going to 0 point, आपको शिव मंदिर पड़ता है जो कि युमथांग से 7-8 किलोमीटर्स के डिस्टेंस में है. उस जगह पे आपको परमिशन फिर से दिखाना पड़ता है, और रिटर्न में भी वो परमिशन दिखा के सिग्नेचर करवा के आना पड़ता है आपको नीचे तक. सो गाइस, लाचुंग से 0 माइल अराउंड 53 किलोमीटर है, एंड आप जब राइड करते हो लाचुंग से तो आपको बीच में बहुत सारे पॉइंट्स है जहाँ पर खाने पीने का मिल सकता है. जैसे कि ये फर्स्ट पॉइंट है जो कि युमथांग का स्टार्टिंग पॉइंट है. यहाँ से युमथांग 3 किलोमीटर्स है, और युमथांग में बहुत ज़्यादा आपको खाने पीने का भी मिलेगा. और इस पॉइंट पे हम लोगों को एक ब्रिज है, वहाँ पर जाने वाले हैं, और यहाँ पर हॉट स्प्रिंग भी है. तो मेक श्योर दैट यू विजिट दिस प्लेस. On the way, you will be riding through some amazing hairpin bends with a view of flowers on your sides. 0 point is very close to the international border between India and China, and hence beyond this point there are no civilian roads. This is why it is called as 0 point.
Hey guys, अभी हम लोग हैं 0 point पे. We have ride the bike for 2 hours and we reached here. It's not that great place, but the way through the Yumthang Valley is wonderful. That's the reason you should ride this place. There is nothing much at 0 point, but the way that you drive through is awesome. You will be able to find lots of flowers everywhere, and it's an amazing ride, I would say. So you must visit this place. After our ride back from 0 point, we visited the Lachung Monastery, which is hardly 1.5 kilometer away from the city center of Lachung. It is a small monastery but quite beautiful, so you must visit this place.